Hello, a very good morning to all. And today is International Yoga Day. So I wish you all that you all keep doing yoga, not just to keep yourself healthy, your physique good, but also to keep your mind and soul healthy. So, with this, let's just come to today's news discussion that we have. Okay, so the first news that we have is related to WTO Ministerial Conference. So, we will try to understand that what all context was there in which this conference happened, आउटकम क्या थे, क्या डिस्कशंस थे, सो ऑल दैट वी विल सी. उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि WTO विच इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो क्या है, कब वो बना था, कैसे वर्क करता है, थोड़ा बेसिक्स उसके बारे में देखेंगे. प्लस वी विल ऑल्सो सी कि WTO का जो मिनिस्टेरियल कॉन्फ्रेंस है वो क्या है. ओके, सो लेट्स जस्ट बिगिन. So recently, member countries of World Trade Organization wrapped up the ministerial conference 12th outing. So it was ministerial conference, which is in short also said as MC. So जो भी number होता है ये 12th थी. Okay, so you can have such question कि 2022 में कौन सा हुआ था. So it was 12th ministerial conference. So it is called as Geneva package because it actually took place in Geneva. Okay, so क्या उसके आउटकम थे अभी शॉर्ट में देख रहे हैं, आगे हम डिटेल्ड में उसको देखेंगे क्या आउटकम थे. The conference had secured key agreements on number 1, relaxing patent regulation to achieve global vaccination equity. So जो पेटेंट रेगुलेशन है उनको थोड़ा रिलैक्स किया है ताकि जो वैक्सीनेशन है, कोविड वैक्सीनेशन, वो सब तक पहुंच सके, चाहे वो बहुत ही पुअर कंट्रीज है उन तक भी पहुंच सके. एंड देन इंश्योरिंग फूड सिक्योरिटी बिकॉज वी हैव सीन इन लास्ट 2 years व्हेन पेंडेमिक हैपेंड तो फूड सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था. तो जो वर्ल्ड लेवल पे फूड सिक्योरिटी है कि खाना पूरी तरीके से बेसिक नेसेसिटी जो है वो पूरी तरीके से अवेलेबल हो, उसके लिए दे हैव ट्राइड टू वर्क अपॉन दैट. उस पर डिस्कशन हुआ है. Then according subsidies for the fisheries sector. So जो फिशरी सेक्टर्स में जो लोग काम करते हैं, जो उसमें एंगेज्ड हैं, उनके लिए सब्सिडीज का अरेंजमेंट किया है. कंटिन्यूइंग मोरेटोरियम रिलेटेड टू ई कॉमर्स. जो भी ई कॉमर्स है उससे रिलेटेड जो भी अभी तक प्रोहिबिशन है वो कंटिन्यू रहेगा, टैक्सेस वगैरह का जो प्रोहिबिशन है. नाउ दिस इज वन होमवर्क फॉर यू. शी इज द फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ WTO. Now you have to tell me in comments that what's her name and कौन से कंट्री से है. So this is your homework that you have to tell me this. So she is the first woman to be the director general of WTO. Okay. Name you will tell me. Okay, so together they constitute what WTO Director General is referred to as Geneva package. So ये जो मेन 4 मुद्दे हैं जिन पे बात हुई है, इनको together they call it Geneva package. Okay, so what is, if you have a question what is Geneva package or what all are indulged in Geneva package, so ये 4 point है. इसके अलावा जो भी आएगा that will not be a part of it. Okay. India saw some successes at MC12 with respect to the above mentioned sectors. So India के भी कुछ मुद्दे थे जिसमें कि इंडिया का काफी positive successes रहे. And what are that we will see in detail in just few slides. सबसे पहले let's just try to understand that what is World Trade Organization. So trade जैसे कि सुनाई दे रहा है आपको, ट्रेड मतलब काम से रिलेटेड जो ट्रेड्स होते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट सामान का जो आयात निर्यात होता है कंट्रीज के बीच, उस सब से रिलेटेड. तो ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है.
WTO was actually established in 1995 after the Uruguay round negotiation. WTO replaced the General Agreement on Tariff and Trade that had been established in 1948. तो WTO ने किसको रिप्लेस करा है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. WTO ने रिप्लेस किया है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो कि 1948 में एस्टेब्लिश हुआ था. तो 1948 में ये एस्टेब्लिश हुआ था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, और उसको रिप्लेस किया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ने इन 1995. सो हेडक्वार्टर्स कहाँ है इसके भाई? जिनेवा, स्विट्जरलैंड. Okay, or members, WTO has over 160 member countries, which represent about 98% of global trade. So almost we have 160. There are total 160 member countries, जिसमें से वो about 98% of global trade को represent करते हैं. This is important. 98% is big, हाँ. तभी WTA की इतनी ज्यादा importance है. Now, WTA is the only global international organization dealing with the rules of trade between nations. तो WTO सिर्फ एक ही ऐसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल लेवल पे जो कि डील करती है कि कंट्रीज जब एक दूसरे से ट्रेड करेंगी, जब उनके बीच में एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, तो क्या रूल्स रहेंगे, क्या एक्सपोर्ट ड्यूटी लगेगी, इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी, टैक्स क्या लगेगा, ऑल दीज थिंग, क्या टैरिफ्स होंगे, कैसे कितना परसेंट इंपोर्ट होगा, कैसे एक्सपोर्ट होगा, ऑल दीज थिंग्स आर डिसाइडेड एंड दोज रूल्स आर मेड बाय WTO ओनली. So WTO is the only organization, international organization rather, जो कि ये सारे रूल्स बनाती है. The key objective of the organization is to ensure that global trade takes place as smoothly, predictably and freely as possible. देखो ये क्यों जरूरी है? एक, we need to have at least one such organization ताकि स्मूथली ट्रेड हो सके. अदरवाइज हर कंट्री अपना रूल बनाएगी तो बहुत ज्यादा chaos हो जाएगा, and it will be very difficult to have a free good environment for trade. So इसीलिए we need to have some organization like World Trade Organization in order to have a very smooth and flexible trade throughout the countries. All decisions at WTO are made through consensus among member countries at various councils and committees. तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है WTO में कि कोई एक हेड है जिसकी बात ही मानी जाएगी, बट देयर आर मेंबर कंट्रीज एंड उनके आपसी डिसीजन से, कंसेंसस से डिसीजन लिए जाते हैं कि क्या फाइनली होना है, क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है. WTO drives its income from contributions by its members, and these contributions are based on formula that consider members' share of international trade. So ये जितना भी WTO को, obviously you need to have money in order to run a organization, an organization. तो ये जो contribution है ये कहाँ से आता है? ये पूरा contribution आता है from its members. जो भी countries हैं, जो भी are the members of WTO, वो contribute करते हैं. Okay. Now we will try to understand that what is WTO's ministerial conference specifically. Okay, so जो World Trade Organization है, इसके बहुत सारे we have different organizations उसके अंदर भी. तो उसमें से एक है जो है ministerial conference. The ministerial conference is at the very top of WTO's organizational chart. So it is the topmost organization in the organizational chart. It meets once every 2 years and it can take decision on all matters under any multilateral trade agreement. So ये कब मिलती है? This is very important. It meets once every 2 weeks. तो 2 years. So 2 साल में एक बार मीटिंग होती है and ये सारे decisions लेते हैं related to multilateral trade agreements. Unlike other organizations such as the International Monetary Fund or World Bank, WTO does not delegate power to a board of directors or any organizational chief. तो ऐसा नहीं है कि इनके पास कोई एक
एक हेड है कोई, ओके, जिसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो सारे डिसीजंस लेंगे, बट इन डब्ल्यूटीओ के जो मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस है, यहाँ पे कलेक्टिवली डिसीजन लिया जाता है जो भी सारे मेंबर्स हैं उनके, जैसा कि हमने डब्ल्यूटीओ में स्पेसिफिकली बताया था, जनरली आई मीन, एंड डब्ल्यूटीओ एमसी में स्पेसिफिकली. So all decisions at WTO are made collectively and through consensus. So जहां पे भी WTO आ जाएगा तो ऐसा नहीं होगा कि पावर सिर्फ एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या ऑर्गेनाइजेशन के चीफ के पास होगी, बट सारे जो कंट्रीज हैं, मेंबर्स हैं, दे ऑल आर इम्पोर्टेंट एंड उनके ही कंसेंसस से डिसीजन लिया जाता है. दिस ईयर कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस इन जिनेवा, स्विट्जरलैंड. ये तो हमने देख ही लिया है. ओके, नाउ अब हम स्पेसिफिकली देखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से, कि क्या क्या आउटकम्स रहे 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के. नाउ नंबर 1 इज डिस्कशन ओवर एग्रीकल्चर. सो वी हैव डिवाइडेड इट इनटू पॉइंट्स. पॉइंट नंबर 1 इज डिस्कशन ओवर एग्रीकल्चर. नाउ व्हाट इज दिस डिस्कशन? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. The agreements on agriculture are said to be very significant for India. So whatever decisions had been taken, whatever agreements have been taken, इसमें इंडिया के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट ये साबित हुआ है. The main focus of the agreements on the subject was to ensure availability, accessibility, and affordability of food for those in need during humanitarian emergencies. इसको समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, ड्यूरिंग कोविड टाइम इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर सम पीपल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली होनली सम वेरी पुअर कंट्रीज. वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं थी फूड की, एंड क्योंकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे बहुत डिपेंडेंट रहता है, सब कुछ बंद हो गया था कोविड के टाइम पे, तो लोगों तक खाना पहुंच नहीं पा रहा था. एंड क्योंकि कम जो है अनाज वगैरह बचा था, तो उस केस में क्या हुआ था कि जो अफोर्डेबिलिटी है वो बहुत ही हैम्पर हो गई थी, क्योंकि चीजें बहुत महंगी हो गई थी. जब नीड्स ज्यादा थी, सामान लिमिटेड था, तो जो है महंगाई बढ़ गई थी. तो सबसे ज्यादा मेन फोकस जो रखा गया है इस एग्रीमेंट में वो ये है कि अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड, ताकि एक अच्छी एक सोसाइटी बनाई जा सके जहाँ पे हर किसी को खाना पानी ठीक से मिले, समय पे मिले, एंड all these things. Okay. Now the next important point is India, which has been a key contributor to the World Food Program. So we have this World Food Program, जिसमें India, obviously we have a very good agricultural economy. तो India का इसमें बहुत ही important role हो जाता है. Had held that it had never imposed export restriction for procurement under the program, and said that a blanket exemption could impact its work in ensuring domestic food security. मतलब कि इंडिया जो है वो एक ही बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर रहा है हमेशा से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम. ओके, नाउ इंडिया हैज दिस पॉइंट कि अगर ब्लैंकेट एग्जेम्पशन जो है अगर उसको लगाते हैं, मतलब कि कोई लिमिट नहीं है एक्सपोर्ट, तो अगर कोई लिमिट नहीं रहेगी तो कहीं ना कहीं जो इंडिया की डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी है वो हैम्पर हो सकती है, वो डिस्टर्ब हो सकती है. क्यों? क्योंकि जब सेलर्स को कोई लिमिट ही नहीं है, आप कितना भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो फिर जब आप सारा एक्सपोर्ट कर दोगे, क्योंकि लिमिट ही नहीं है, तो जब आप एक्सपोर्ट कर दोगे तो घर के लिए क्या बचेगा खाने के लिए? जब आप सारी चीजें बाहर दे आओगे तो घर में क्या बचेगा? सो इट्स लाइक दैट. ओके, सो दिस पॉइंट इंडिया हैज this blanket exemption would have mandated India to comply with its WFP, which is a World Food Program commitments, irrespective of its domestic requirement, but they have to commit irrespective of domestic requirements. Now, it has been agreed that member countries would not impose export bans or restrictions on food items purchased for humanitarian purposes of the World Food Program, and this agreement would not stop member countries from implementing steps to ensure domestic food security. I think this is very much self-explanatory कि जो भी मेंबर कंट्रीज है वो कोई भी एक्सपोर्ट बैन या रिस्ट्रिक्शन किसी भी फूड आइटम जो कि खरीदा गया है किसी ह्यूमैनिटेरियन पर्पस के लिए, मतलब किसी ऐसे आपदा काल के लिए जिसमें
अच्छे काम के लिए, मानव की सहायता के लिए ऐसे परचेज किए गए हैं, तो उसमें कोई भी मेंबर कंपनी किसी भी तरीके का कोई रिस्ट्रिक्शन या बैन नहीं लगाएगी. ओके, सो दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड परफेक्टली, कोई प्रॉब्लम ना हो. Decisions were taken that encouraged member countries will available surplus to release them to the international markets in compliance with WTO regulation. तो जो भी surplus इकट्ठा होगा member countries में, जो भी surplus बचेगा in terms of these food, all these things, तो वो सारा जो है international market में वो WTO के regulation के हिसाब से they will provide. They will release that in international market. The agreement also gave risk to a work program that will come up with steps to help LDCs, which is least developed countries, and net food importing developing countries improve their domestic food security and increase their agricultural output. So इस पे भी ध्यान देंगे कि जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज है, जो पुअर कंट्रीज हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनके लिए उनकी जो डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी है उस पर ध्यान दिया जाए एंड ऐसे प्रोग्राम्स बनाए जाए जिससे वो उनका जो एग्रीकल्चरल इनपुट है वो इंक्रीज हो सके. However, the agreement failed to address issues like permissible public stock holding threshold of domestic food security, domestic supply for agriculture, cotton and market access. So these are the points जिसपे कि जिसके कुछ रिजोल्यूशन कोई उसको किसी ने एड्रेस नहीं कर पाए वो लोग in the meeting this issue. Okay. Now there is another. I told you we have divided these agreements into points. कि क्या क्या बात हुई, क्या क्या outcomes है. The second one is agreement on fishery sector. India succeeded in negotiation an agreement that eliminated subsidies to those involved in illegal and unregulated fishing. So India has put this point and they wanted to have agreement कि जो सब्सिडी है वो हटाई जाए ऐसे लोगों से जो कि इलीगल और अनरेगुलेटेड फिशिंग कर रहे हैं, मतलब जरूरत से ज्यादा कर रहे हैं, जो कि हार्म कर सकता है इकोसिस्टम को. The only exemption for the continuation of subsidies for overfishing is when they are deemed necessary to establish a biological sustainable level. तो सिर्फ ऐसे केसेस में ये हटाया गया है, मतलब exemption है and they are provided with the subsidies, जबकि वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो कि sustainability को maintain कर रहा है. Overfishing means exploiting fish at pace faster than they could replenish themselves. So overfishing मतलब obviously this is very much self-explanatory कि जब जितनी जरूरत है उससे ज्यादा आप फिशिंग कर रहे हो तो कहीं ना कहीं जितनी स्पीड से वो बढ़ेंगे उससे ज्यादा स्पीड से आप फिशिंग कर रहे हो, तो वो जो बैलेंस है जितना नंबर होना चाहिए वो वेरी करेगा और धीरे धीरे वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे कि जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाए. Declining fish stock pose a threat of aggravating poverty and thereby affecting the life and the livelihoods of fishing community. So ये जो थ्रेट है ये कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं, जो उनकी जो कम्युनिटी है ऐसे लोगों की जो सिर्फ इसी पे फिशिंग पे ही निर्भर है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं it becomes a threat. The agreement also meant that there will not be any restriction on subsidies granted by developing or least developed countries for fishing within their exclusive economic zone. Okay, so जो least developed countries हैं या developing countries हैं उनके लिए इस पे कोई restriction नहीं है subsidies पे, they will be granted. Okay, now the third one is agreement on the moratorium on electronic transmission. Now what is electronic transmission? मतलब जैसे हो गया कोई मूवी हो गई या कोई सॉफ्टवेयर हो गया
So all these things, that is called as electronic transmission. So electronic transmission contribute constitutes online deliveries such as music, ebooks, films, softwares, and video games. Okay? Despite being ordered online, electronic transmission is affected is different from other cross-border e-commerce as they are not delivered physically. So obviously, अगर हमें कोई movie देखनी है which is made in some other country, कोई Hollywood movie देखनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि वो physically उसकी कोई CD आएगी या कुछ आएगा, कोई मटेरियल आएगा, but it is available on internet or on many softwares, many apps. ठीक है. So agreement were reached to extend the current moratorium on not imposing custom duties on electronic transmission until MC30. So क्या एग्रीमेंट आया है कि जो करंट मॉरिटोरियम है, जो रिस्ट्रिक्शन है कि टैक्स नहीं लग रहा है, कस्टम ड्यूटी नहीं लग रही है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पे, वो ऐसे ही चलेगी कब तक, जब तक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 30 नहीं होती, तो मतलब कम से कम 2 साल. This move was supported by over 105 countries, which include advanced economies such as US, UK, Australia, China, and Japan. Now, let's see what has India has to say. These countries felt that in the backdrop of the COVID pandemic, an extension of the moratorium would help ensure certainty and predictability for business and consumers. So they wanted to be restricted. अभी जो moratorium है इसका extension होना चाहिए because we are living in a aftermath of COVID pandemic. Now India and South Africa, what are their takes? Has opposed the move by highlighting the fact that the data from the UN Conference on Trade and Development showed that the extension of duty-free market access due to the moratorium led to a loss of $10 billion per annum globally, and about 95% of it was borne by developing countries. So India and South Africa इसके अपोज में थे, वो चाहते थे कि मॉरिटोरियम जो है ऑन द कस्टम ड्यूटी उसको अब हटाया जाए एंड अब प्रॉपरली जो भी टैक्सेस है वो लगाए जाए, क्योंकि इसमें से जो लास्ट एनुअली जो नुकसान हो रहा है वो $10 बिलियन का हो रहा है, जिसमें से 95% वो है जो डेवलपिंग कंट्रीज को ही लॉस हो रहा है. Okay, so we come to an end of this news. Now we have another news which is about recognizing the compulsory women worker. So it's a news related to the women worker. क्या जो है recently देखा गया है कि जो women worker है वो बहुत ही कम हो गए हैं, and what are all those things? So we will try to understand. So recently the Center for Monitoring Indian Economy has reported that the labor participation rate of rural women stood at 9.92% in March 22 compared to 67.24% of men. So जो rural women का participation है in the labor work वो सिर्फ 9.92% है मेल के कंपैरिजन में, which is 67.24. मतलब just see difference देखो आप कितना ज्यादा डिफरेंस है. And let's just continue. According to CMIE, which is the Center for Monitoring Indian Economy, the dropping out of women from the labor market is one of the main reasons for this large difference in labor participation rate between rural women and men. So ये dropping out है जो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है. अभी रिसेंटली जो है ड्यू टू कोविड टाइम देयर आर सो मेनी वुमेन हु हैव ड्रॉप्ड आउट फ्रॉम वर्किंग इन द लेबर मार्केट, एंड इसी वजह से जो है इतना लार्ज डिफरेंस वुमेन एंड मेन के रेशियो में दिखने को मिल रहा है. नाउ व्हाट आर द चैलेंजेस फॉर रूरल वुमेन वर्कफोर्स? Lack of fixed employment opportunity. So rural women have had to often look for different employment opportunity. So आज अभी हार्वेस्टिंग हो रही है तो खेतों में काम कर लिया, ओके,
फिर अभी कहीं और काम कर लिया, फिर जैसे कि किसी और के घर पे काम कर लिया कुछ टाइम, फिर वहां से छोड़ के अपने खेतों में काम कर लिया। सो ऑल दीज थिंग, कोई एक फिक्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है उनके पास। 4 महीने कुछ किया, 3 महीने कुछ किया, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इट हैम्पर्स। While farm labor activities provide seasonal job opportunities, during the off-season period, rural women works are pushed into looking for job opportunities. So जब season नहीं है, जब harvesting नहीं हो रही है, तब what will they do? They will look for some other kind of jobs in construction sites or work as migrant workers or other odd jobs. So या तो construction site में they will look for job, या फिर और they will go to other states, other cities for looking for jobs. The mechanization of agricultural operations had drastically decreased the number of work days available to rural women workforce and pushed them into odd jobs. So, जो जिस तरीके से एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस होते हैं उसकी वजह से जो वुमेन का नंबर है इन वर्कफोर्स वो बहुत ज्यादा बिगड़ गया है या कम हो गया है। Now, what are the challenges in work? Work at construction sites is mostly part-time and need migration from their villages. So जो भी construction site पे अगर वो जाके work करते हैं या तो वो part time होगा, plus most importantly they have to move from their village. तो जहाँ पे काम कर रहे हैं, जहाँ पे रहते हैं वहां पे हमेशा काम मिले, it is not possible. Okay, so they have to move out. Also, since they have not been registered as construction workers, they continue to remain ineligible for any legal benefit accruing to them from the Construction Workers Welfare Board. So, क्योंकि actually तो they are involved in some kind of agricultural activity, but off season है तो वो चले जाते हैं कंस्ट्रक्शन वर्कर की तरह काम करने, बट एक्चुअली दे आर नॉट लीगली वो कहीं ना कहीं एलिजिबल नहीं है क्योंकि उन्होंने अपना कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराया हुआ है। सो बिकॉज ऑफ दिस उनको कोई बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड की तरफ से मिलते हैं। ऑल्सो वुमेन वर्किंग इन कंस्ट्रक्शन साइट आर पेड लेस देन मेन। सो ये डिस्पैरिटी तो छोटी जॉब से लेके बड़ी जॉब तक में है कि जो वुमेन है फॉर द सेम लेवल ऑफ वर्क, फॉर द सेम काइंड ऑफ वर्क जो कि एक मैन कर रहा है, एंड she gets less paid, and जो सेम काम मैन कर रहा है उसको ज्यादा पैसा मिलता है। ओके, challenges in MG Narega. The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act offers work opportunity for rural workforce, but this too is plagued by some challenges. As against the guaranteed 100 working days, there have been reports of work availability days being less than this mandated number of work. So इसमें मैंडेटरी है, गारंटी दी जाती है एमजी नरेगा प्रोग्राम में कि एटलीस्ट 100 डेज का काम तो मिलेगा ही, बट एक्चुअली जो एक्चुअली फील्ड लेवल पे जो अवेलेबिलिटी है दैट इज वेरी वेरी लेस। ओके, now women are having to undertake physically challenging work. There are reports of women workforce being underpaid for not being able to complete the challenging physical work. So ऐसे काम फिर उनको अंडरटेक करने पड़ते हैं जिसमें कि फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा लगती है, क्योंकि वो उनके लिए डिफिकल्ट है करना, बट दे हैव टू, दे डोंट हैव एनी ऑप्शन, तो दे हैव टू। और उसके लिए उनको बहुत ही अंडर पे किए जाते हैं, बहुत ही कम जो है पैसा दिया जाता है, wages कम दिए जाते हैं। Lack of basic facilities like crutch facilities, provision of drinking water at work site remain a major challenge for rural women workforce. तो जो बेसिक फैसिलिटीज है लाइक क्रच फैसिलिटीज, ये तो आई डोंट नो व्हाई इज इट देयर, बट क्या ही एक जो मेन अच्छे सेक्टर, मतलब एक जो थोड़ी ऊंची जॉब भी कर रही होती है वुमेन, उसके लिए भी ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है, इट्स नॉट वेरी मच अवेलेबल। तो जो कंस्ट्रक्शन साइट पे बेचारी औरतें काम कर रही हैं, रूरल एरिया में जो काम कर रही हैं, उनके लिए तो ये फैसिलिटीज कहाँ से ही देंगे ये लोग। तो दिस इज एक्चुअली, दीज आर द चैलेंजेस जिनको एक्चुअली एड्रेस किया जाना चाहिए एंड जिन पे वर्क किया जाना चाहिए इन ऑर्डर टू हैव अ गुड वर्क प्लेस वेयर
they can work, where they can grow. Now, what are the recommendations? So, providing minimum wages. तो ऐसा हो जाना चाहिए कि मिनिमम वेज जो है वो फिक्स कर देना चाहिए, एंड चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, जो काम कर रहा है उसको उतना वेज मिलेगा ही. So notably, the lack of fixed piece rate of women labor has resulted in underpayment of women laborers in India. In this regard, it is very important to ensure minimum living wage for women with piece rate fixed at different types of women's labor. So वही बात that I told you कि एक minimum fixed प्राइस होना ही चाहिए, वेज होना ही चाहिए कि फॉर दिस पर्टिकुलर वर्क एक दिन में इतना पैसा मिलेगा ही. ओके, ऐसा नहीं होना चाहिए that you are a woman, you will get 200 and a man will get 300 for the same kind of work. So it should be the thing. Then financial support. Landless manual laborers in rural India, especially women, should be provided cash support like the one being provided for small farmers. जैसे कि small farmers के लिए जो कैश सपोर्ट दिया जाता है, फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है, सिमिलरली जो वुमेन है उनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा कैश सपोर्ट दिया जाना चाहिए जो कि लैंडलेस मैनुअल लेबर्स है, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू सस्टेन. So in that case, it is very mandatory, very necessary to have some kind of financial support. Improving work conditions. The schedule of breaks for women at MG project based on impossibly high productivity rate must be lowered and the work site made more worker friendly. So ऐसी साइट होनी चाहिए, ऐसी पॉलिसीज होनी चाहिए, ऐसी कंडीशंस होनी चाहिए जहाँ पे औरतें आराम से काम कर सके, उनकी बेसिक नेसेसिटीज फुलफिल हो सके, एंड दे कैन कंटिन्यू वर्किंग. There is the need, then we have data driven policies, मतलब सर्वे कर सकते हैं all those things. There is the need for widespread surveys of poor rural women and how they spend their time to unravel the plight of rural women workforce in India. This can provide valuable insight for making suitable laws and policies that address their issues. So क्या करना चाहिए? सर्वेस करने चाहिए, रूरल वुमेन से जाके बात करनी चाहिए, डेटा कलेक्ट करना चाहिए, एंड कहीं ना कहीं फिर जाके ऑन द बेसिस ऑफ दैट डेटा, उस डेटा को प्रॉपर्ली स्टडी किया जाना चाहिए, एंड देन वी मस्ट बी डिसाइडिंग द लॉज एंड पॉलिसी, ताकि वो जो भी इश्यूज हैं उनके वो ठीक किए जा सके. Okay, the next news that we have is related to India Bangladesh should work on river management. Okay, so India और बांग्लादेश जो है वो काफी सारी रिवर्स को शेयर करते हैं, काफी सारी ऐसी रिवर्स हैं, ऑलमोस्ट आई थिंक मोर देन 50 रिवर्स आर देयर, 54 55, जो कि इंडिया एंड बांग्लादेश दोनों शेयर करते हैं. तो हाउ टू डू रिवर मैनेजमेंट प्रॉपरली बिटवीन द टू कंट्री, उसके ऊपर ये आर्टिकल है, एंड लेट्स जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड. During the 7th round of India-Bangladesh Joint Consultative Commission, the India External Affairs Minister said that India and Bangladesh should work together for comprehensive management of rivers. The two countries share about 54 rivers, and parts of Bangladesh and Northeast India states are experiencing unprecedented flood in the recent few days. So there is also this case of flood. हमने अभी अपने न्यूज में देखा होगा, न्यूज में उतना नहीं दिखा रहे, but I have seen, maybe you people will be aware कि ऐसे में बहुत ज्यादा फ्लड आए हैं. This requires both the countries to work together and share environmental responsibility in these areas. So for taking care of this thing कि इतनी ज्यादा जो फ्लड्स आ रही हैं और जो रिवर मैनेजमेंट है उसको करने के लिए दोनों कंट्रीज को मिलके काम करना पड़ेगा. ओके, सो हियर यू आल्सो हैव द मैप. नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट वन ऑफ द important rivers, about Teesta River. Okay, so Teesta River is a 315-kilometer long river that rises in the eastern Himalayas, flows through the Indian states of Sikkim and West Bengal,
through Bangladesh and enters the Bay of Bengal. Okay, so here in the map you can see the river, Teesta River. Okay, so it is flowing from Sikkim, Himalaya से आती है, and then follows Sikkim and then West Bengal, and then ये इधर से जाके पूरा इनके बांग्लादेश से जाके then it goes to Bay of Bengal. It is a tributary of Brahmaputra, known as Jamuna in Bangladesh. Okay, so ये जो है टीस्टा रिवर जो है ये ट्रिब्यूटरी है ब्रह्मपुत्र रिवर की. ओके, एंड इसको जमुना बोलते हैं बांग्लादेश में. एंड हमारे देश में जमुना कौन सी रिवर को बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन फॉर यू पीपल. ओके, आई होप यू विल गेट आंसर. Flowing through India and Bangladesh. So it originates in Himalayas near Chunthang, Sikkim, and flows to the south through West Bengal before entering Bangladesh. So Himalaya के near आती है ये सिक्किम से, फिर फ्लो के वेस्ट बंगाल में जाती है एंड देन बांग्लादेश में एंटर. Originally it continued southward to empty directly into the Padma River, but around 1787 the river changed its course to flow eastward to join the Jamuna River. Okay, the Teesta Barrage Dam helps to provide irrigation for the plain between the upper Padma and Jamuna. So ये जो इसका जो डैम बना हुआ है वो हेल्प करता है, इरिगेशन प्रोवाइड करता है द प्लेन्स ऑफ अपर पद्मा एंड जमुना. Okay, so this is it. These were the news that we had. Now we have some questions that we need to discuss today. Let's just try to see the questions. Okay, so in India, the term public key infrastructure is used in the context of number 1, digital security infrastructure, number 2, food security infrastructure, number 3, healthcare and education infrastructure, number 4, telecommunication and transportation infrastructure. Now, what do you think? Which will be the correct answer for this particular question? Public key infrastructure. So the right answer for this question is digital security infrastructure. Okay, so this public key infrastructure is actually used in terms of, in the context of digital security infrastructure. So A is the correct answer for this particular question. Okay, the next question that we have is, which of the following are transboundary rivers? So transboundary rivers मतलब जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में फ्लो कर रही है, एक कंट्री से ज्यादा के बीच में. ओके, सो नंबर 1 इज फेनी, टीस्टा, मनगोट, कुशियार. So out of these 4, which of these are transboundary rivers? Options है आपके पास. Which of the above statement is or are correct? Only 1, only 2, only 3, all the above. We have just read about the rivers. Now, obviously, we did not discuss the names of all the rivers. But what do you think? Transboundary river कौन सी है इनमें से? चारों है, 3 है, 2 है या 1? Okay, so the answer is D, that all the above. ये चारों जो rivers हैं, ये चारों ही बांग्लादेश और इंडिया के बीच में फ्लो करती हैं. All the above rivers are transboundary rivers between India and Bangladesh. The 2 countries share about 54 rivers. ये अभी हमने देखा था. ये जो दोनों कंट्रीज हैं इंडिया एंड बांग्लादेश, इनके बीच में about 54 rivers जो है वो फ्लो करती हैं. These are all transboundary rivers. Okay, so with this we come to an end on our discussion, and I'll see you soon with another session on this daily current affairs. Till then, try to answer the questions that I have asked you in the comment. Thank you so much and have a nice day.